So we started off with states of matter. हमने study किया हमारी states of matter. ये हमारे पास page number बनता है बेटा 22. We are starting the revision from page number 22, although our actual topic will start from page number 24. Okay, on page number 22, from the states of matter, we studied that the states of matter are solid, liquid, and gases, and we know that changing the temperature or pressure, we can change this state in which a substance exists. We understand we can do that by simply changing temperature, and we studied that as well. Now we define matter as anything that has mass and then that can take up space, and all three physical states, solid, liquids, and gases, do that. So they are states of matter. We understand that they all show with the change in temperature and pressure some increase in volume. We usually call that an expansion, or a decrease in volume. We usually call that a contraction if the temperature is changed. For example, an expansion is shown when the temperature is increased, or a contraction is shown when the temperature is decreased. These changes might be bigger for a few states of matter, such as gases, than the other states of matter, like liquids or solids. We then studied a table about volume, that solid liquid has fixed volume, but gas expands to fill up the space. As much space as is given to the gas, it expands to that. So there is no fixed volume of a gas. When we discuss the density, solid is a high density, liquid might have a moderate density or to high density. For example, water is a moderate density liquid, but honey is a high density liquid. We also studied that gases have a low density as compared to solids and liquids. When we talk about shape, only solid is the one that has a definite or a fixed shape. In case of liquid or gas, they have no definite shape and they always take the shape of the container. For example, if we fill water into a glass, it will take the shape of a glass. If we fill it into a jug, it will take this shape of the jug. When it comes to fluidity, solids do not flow, liquids flow, well, gases flow easiest and most easily than all other states of matters. Okay? So changing these physical states can easily be done by changing temperature and pressure. However, we will discuss temperature over here. For example, we know that the solid can be simply melted into a liquid at its melting point by increasing the temperature, and the phenomenon will be known as melting. The temperature point will be known as melting point, and we can reverse the process at the same temperature by cooling, and the phenomenon will then be known as freezing, and the temperature would then be known as freezing point. Usually melting point and freezing point for a given substance are the same temperature. For example, pure water melts or freezes at 0 degrees centigrade. That means at 0 degrees centigrade, the ice would be converted into water and the water can be converted back into ice. We took another example of gallium. Gallium is a metal that has a melting point just above the room temperature, so it would easily melt in a person's hand. And we also showed you the diagram for this gallium metal being melted on just above the room temperature in a person's hand, right? So getting back to the point, we had a diagram, figure 2.2, in which we studied that a solid can be melted into a liquid, or liquid can be vaporized or evaporated into a gas. The gas can be liquefied back into a liquid by simply cooling, and on further cooling, the liquid can be frozen into a solid. This process may also be known as solidification. However, freezing and solidification are somewhat different things, and only freezing is a part of our syllabus. Solidification is actually beyond the requirements of IGCSE, so we never define solidification exactly. However, we can bypass the liquid state and the gases can be converted into solids, and the solids can directly be converted back into gases by the process of sublimation. And the sublimation does not apply to all the substances, it applies to specific substances. And here, when we were defining sublimation, I asked you to write a few examples. For example, carbon dioxide or dry ice is given over here as an example. Dry ice is the name of solid form of carbon dioxide. We discussed its uses. Well, with the other example that we took was iodine.
I showed you the diagram for iodine, which is present on page number 24 of your book. Take a look. The solid part of the iodine is still present in the gray-black form. However, the gaseous part of iodine is present in the form of violet vapors. So iodine can be sublimed, can be converted into gaseous state from liquid state, or from gaseous to solid state, solid to gaseous state, or gaseous back to solid state. It always bypasses the liquid state. For the things that are subliming or going through the process of sublimation, liquid state is usually bypassed. They are directly converted from gaseous to solids or solid to gaseous. Hence, we have a different word of sublimation, a different definition other than melting, freezing, liquefaction, or vaporizing. So this is the temperature scale shown over here. So solid will go all the way from liquid to gases, while when we increase the temperature and when we decrease the temperature, the opposite would happen. Okay. So the same thing is given over here in terms of temperature. Then we studied different other definitions, such as we studied evaporation, that we, by the example of water, that water evaporates at room temperature, for example, after rain splashes of water or rain puddles dry up, or even if we pour some liquid onto a surface or spill some liquid onto a surface, it would dry up eventually by the process of evaporation, even when we don't try to dry it up. And that would be known as evaporation. Evaporation takes place from the surface of a liquid. Evaporation may take place at any temperature. However, if the surface area is larger, faster will be the liquid evaporating, or warmer the liquid is, or warmer the atmosphere of the liquid is, the faster it evaporates. And not just that, we studied other factors that affect the rate of evaporation, such as airspeed, such as humidity, or such as the nature of the liquid, or the force between the molecules by which the liquid is together, by the force from which we can define if that is stronger, the liquid would evaporate slower, or if those forces are weaker, the liquid would evaporate faster. We haven't discussed or studied those forces in detail. However, we will do that a little later in the same chapter. Now, if the temperature is high, the faster would be the evaporation process of the liquid. But if it becomes very high, the bubbles of gas will appear inside the liquid. This process is commonly known as boiling, and we then define boiling in a separate way. I told you the definition of boiling, according to your book, would be when the vapor pressure meets the atmospheric or the external pressure. The temperature point would be known as boiling point, and the phenomenon would be known as boiling. Now, volatile liquids have a lower boiling point and non-volatile liquids have a higher boiling point. For example, we compared water with the most common alcohol, ethanol. Ethanol has a boiling point of 78 degrees centigrade. Water has a boiling point of 100 degrees centigrade in their pure forms. So we call ethanol more volatile than water. Why? It has a lower boiling point and it would evaporate easily, which means if something has a lower boiling point, it evaporates easier than the one which has a higher boiling point. See, in this case, ethanol having a boiling point of 78 degrees centigrade would be more volatile than water, of course, which has a higher boiling point of 100 degrees centigrade. See, moving on, we studied that reverse of evaporation is condensation. It is usually brought about by cooling, and we studied and saw that even with the change of pressure, it is easy to condense a gas bed into a liquid. And we gave that example of water vapors, that we can always condense them back into liquid water by cooling or by increasing the pressure, any one of those. The boiling point can be further discussed if we define atmospheric pressure, the pressure around us, the pressure exerted by air on the whole planet at sea level is actually considered as atmospheric pressure or standard pressure. I use the same term with the name of external pressure.
Now, atmospheric pressure is actually affected by altitude, height, where we are standing on the planet. Okay? At sea level, this pressure has its actual value, but if we go higher, by that I mean a mountainous area, uh, an area that we usually consider for the purposes of. Better keep your mics mute, Fatma Well. Okay. An area that we usually consider better for tourism, mountainous regions, places like that. I gave you the example of Murray. I gave you the example of Mount Everest on that day, that at standard pressure, the boiling point of water is 100. For example, if we talk about Murray Hills, as you are on a hilling station, higher in altitude, so the boiling point decreases and decreases down to 98 degrees centigrade. At the top of Mount Everest peak, which is the highest point on the planet, okay, would the boiling point decrease? So we discussed the example and I said yes, and I even quoted a value for you that it would decrease down to 69 degrees centigrade at the top of Mount Everest. So higher altitude we go, lower is the boiling point. However, if we go in depth, that boiling point would increase. However, we do that artificially. Surrounding pressure is usually increased, that is by using pressure cookers. Pressure cookers usually increase the surrounding pressure because they are inside a pressurized environment, and hence the boiling point of water increases artificially. That we do in pressure cookers in such a way that the boiling point of water is increased from 100 degrees centigrade to 120 degrees centigrade, and hence it becomes easier for us to cook our food, especially meat, especially lentils, गोश्त पकाना, दालें पकाना, इसी temperature पे easy हो जाता है. So the food is cooked quickly at that temperature, and a longer duration of time for cooking of food is usually avoided and is turned into a shorter duration of time and with better cooking of food. Hence, we use pressure cookers. Okay? That was as much as we did in our previous days, and that was for revision. If you still have any questions from this portion, please let me know. All right, moving on. We are going to go with a few definitions today. Our topic for today is pure substances. As the name suggests, a pure substance is a single substance. If there is any mixture, the opposite of which pure substances is actually mixture, if there's a mixture, it would definitely consist a second substance in it. Okay? So a pure substance is actually a single substance. Milk would be pure if there's just milk and nothing added to it. We call our milk impure when the milkman tends to mix some water in it. A common example from our daily life. हमें पता होता है कि दूध के अंदर बड़े आराम से पानी मिलाया जा सकता है और मिल्क बैंस ये काम कर सकते हैं, तो हम ये बात करते हैं कि हमारा दूध प्योर नहीं है, ठीक है ना, किसी ने इसके अंदर वाटर मिक्स कर दिया. That water would then be impurity. Anything that is not of our concern or that has been mixed into the substance under discussion, okay, would be impurity. And the substance under discussion would be impure. चूंकि हम मिल्क की बात कर रहे थे तो वाटर इम्प्योरिटी हो जाएगा. अगर हम ड्रिंकिंग वाटर की बात करेंगे तो कोई भी चीज जो ड्रिंकिंग वाटर में ऐड है वो इम्प्योरिटी हो जाएगी. लेट मी टेल यू, हमारा ड्रिंकिंग वाटर जो होता है मोस्ट ऑफ द टाइम वो प्योर फॉर्म वाटर नहीं होता. ठीक है. For example, what are drinking water sources? Groundwater is one of the drinking water sources. Natural springs and natural water sources are sometimes our drinking water sources at mountainous regions where the water is good, where the natural water is good. Or we sometimes do clear our water, we try to filter it, we try to purify it by certain methods. But still, we have some salts dissolved into that water. For example, our common table salt is dissolved into that water. So our water is not pure water. Our drinking water is actually not pure water. Okay. We'll consider everything that has been dissolved into water as impurity. So the substance under discussion is considered impure if it has anything mixed into it, or simply a mixture. Okay. That way we can quote many examples. Now, a thing to remember, an important thing to remember
is this line. A pure substance melts and boils at definite temperature. For example, if we were talking about water, we said the ice melts at 0 degrees centigrade and the water boils at 100 degrees centigrade. So these temperatures are quite definite temperatures. I'm not giving you a range like it would melt at 0 degrees centigrade to 5 degrees centigrade. That would be considered as a range. So giving you definite melting point or sharp melting points, for example, it would melt at 0.00 degrees centigrade. That would then be considered as a sharp temperature, a sharp melting point or a sharp boiling point. Okay. The values for melting point and boiling point for a pure substance are precise and hence are predictable. This means we can use them as a test to purify, to test the purity of a sample. Okay. If the predictable or the precise value is there, the sample is pure, and if the value is different, the sample is impure. That is very easy to understand. ठीक है? Ice melt करती है 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर वाटर में. अगर तो वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर मेल्ट कर गई है तो आइस प्योर वाटर की थी, और अगर वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर मेल्ट नहीं की, उससे थोड़ा सा टेम्परेचर ऊपर हो गया या नीचे हो गया, थोड़ा सा डिफरेंट टेम्परेचर हो गया, then that was not the ice made from pure water. As simple as that. तो ये बड़ा इजी सा काम है कि आप सब्सटेंस की प्योरिटी उसकी मेल्टिंग या बॉइलिंग पॉइंट से चेक कर लें, right? So if that is precise and if that is close to the actual value we have on data, हमें पहले से साइंटिस्ट ने एक्सपेरिमेंट करके जो वैल्यूज बताई हुई है उसी से मिलती जुलती है, so it's pure. If not, it's not pure. ठीक है? तो मेल्टिंग पॉइंट जो होता है वो भी किसी सब्सटेंस की प्योरिटी का एक बहुत अच्छा मेजर है. लेट्स फर्स्ट डिस्कस हम मेल्टिंग पॉइंट कैसे फाइंड आउट करते हैं. मेल्टिंग पॉइंट के लिए हमारे पास मेल्टिंग पॉइंट अप्रैटिसेस होते हैं. सिंपल अप्रैटिसेस स्टूडेंट्स ने स्टडी किए होते हैं क्लास 5 में, क्लास 6 में, क्लास 4 में, जिसमें हम किसी भी इंस्ट्रूमेंट को खुद से लेकर हीट कर सकते हैं, या अगर हमारे पास डिजिटल अप्रैटिस है तो वो इलेक्ट्रिकली हीटेड. ये बारिश सॉरी बेटा, मुझे आपकी आवाज ठीक से नहीं है. आप क्या पूछ रहे स्टक हो गए. बेटा? कैन यू हियर मी? क्लास आपको मेरी आवाज आ रही है? आवाज क्या आ रही है? सर आपकी आवाज आ रही है. अच्छा अच्छा, ओके. किसी एक स्टूडेंट के पास हट के आ रही है तो प्रॉब्ली फिर उसके एंड पे इशू होगा, और अगर सबके पास हट के आ रही है तो फिर मेरे एंड पे इशू हो सकता है. वेल, इफ दैट इज सो लेट मी नो. आपकी आवाज ठीक आ रही है. ठीक है, फिर अगर किसी एक स्टूडेंट के एंड पे आ रही हो तो वो अपना नेट कनेक्शन चेक कर लें. ठीक है, लेट मी कंटिन्यू बैक. सो आई वाज डिस्कसिंग कि हम बड़ी इजीली टेम्परेचर मेल्टिंग पॉइंट की टर्म्स में, बॉइलिंग पॉइंट की टर्म्स में मेजर कर लेते हैं. हमारे पास डिजिटल अप्रैटिसेस जो होते हैं वो इलेक्ट्रिकली हीटेड मेल्टिंग पॉइंट अप्रैटिस होते हैं. वो बड़ी स्लोली वर्क करते हैं ताकि आहिस्ता आहिस्ता चीज को मेल्ट किया जाए. A diagram of which is present on page number 25. Figure 2.6 is actually a melting point apparatus. ठीक है, हमारी लैब में भी ये apparatus मौजूद है. ऑलमोस्ट ऐसा ही apparatus है, इसके ऊपर बड़ा क्लियरली मेंशन्ड होता है melting point apparatus. ठीक है, हमारे पास बटन्स होते हैं कि हम चीज़ों को हीट अप करना शुरू कर दें. एक छोटी सी अमाउंट हमने इसके लेकर, इसके अंदर एक ग्लास इम्प्यूर होता है, उसके अंदर किसी सॉलिड की रखी होती है. वो जब मेल्ट होगा तो ऑफ कोर्स वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा. ठीक है, और बड़ी इजीली डिटेक्ट हो जाएगा. दिस इज डिटेक्शन इज बेस्ड अपॉन अ नेकेड आई चेंज. आपके सामने किसी सॉलिड और किसी मेल्टेड लिक्विड का डिफरेंस बड़ी आसानी से नजर आ जाता है. ऐसे छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट्स हमने क्लास 5 में, क्लास 6 में, क्लास 4 में, ऐसे पिछले क्लासेस में किए होते हैं. आपके सामने आपको एक थर्मोमीटर भी नजर आ रहा है. ये एक्चुअली कंप्लीटली डिजिटल अपैरेटस नहीं है. जो कंप्लीटली डिजिटल अपैरेटस होता है उसमें फिर हमारे पास टेम्परेचर जो होता है वो थर्मोमीटर से रीड करने के बजाय डिजिटल फॉर्म में लिखा रहा होता है. वो ज्यादा एक्यूरेसी रखता है इस अपैरेटस से. ठीक है, और हमें ज्यादा प्रिसाइज वैल्यू देता है. ठीक, फॉर एग्जांपल वो हमें 1 डेसिमल पॉइंट तक या 2 डेसिमल पॉइंट्स तक मेल्टिंग पॉइंट की वैल्यू देता है. तो मेल्टिंग पॉइंट अपैरेटस बड़े सिंपल होते हैं, बड़ी इजीली वर्क करते हैं, और इसमें हमें मेल्टिंग जो होती है वो किसी मैग्नीफाइंग ग्लास से पता चल रही होती है. तो आम किसी भी अपैरेटस में जिसमें हम मैनुअली विद द हेल्प ऑफ हीट ही काम कर रहे हो,
उसकी निस्बत जो इलेक्ट्रिकली हीटेड मेल्टिंग पॉइंट अपैरेटस होते हैं वो कहीं ज्यादा अच्छे होते हैं, एक्यूरेट होते हैं, प्रिसाइज होते हैं अपनी वैल्यूज के हिसाब से, तो ज्यादा इजीली पता चल जाता है। ठीक है, किसी भी सब्सटेंस का मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट फाइंड आउट करना उसकी प्योरिटी को डिस्कस करने के हिसाब से बहुत बेहतर है। कैसे, उसी एग्जांपल को देखते हैं। पहले मैं आपको मेल्टिंग पॉइंट अपैरेटस दिखा चुका हूँ। इसी तरह फिर हमारे पास अगर आपने मैनुअली मेजर करना हो मेल्टिंग पॉइंट को तो ये वाला अपैरेटस है, जिसमें आप देख सकते हैं कि हमने एक ऑयल या वाटर का से फिल्ड बीकर लिया है और उसके अंदर हमने फिर थर्मोमीटर और एक छोटी सी मेल्टिंग पॉइंट ट्यूब रखकर उसके अंदर एक सॉलिड फिल किया है। ये सॉलिड जब मेल्ट हो जाएगा, लिक्विड स्टेट में आ जाएगा, तो हमें नेकेड आई ऑब्जर्वेशन से पता चल जाएगा। हम इसे स्लोली हीट करते हैं। ठीक है, ऑयल या वाटर का जो यहाँ पर हमने एक सैंपल रखा है, ठीक है, वो बेसिकली ऑयल बाथ या वाटर बाथ के तौर पे वर्क करता है। ये स्लो और कांस्टेंट हीटिंग के लिए किया जाता है ताकि हम चीजों को आहिस्ता आहिस्ता हीट करके फिर उन्हें कन्वर्ट करें। ऑयल बाथ्स या वाटर बाथ्स जो होते हैं घरों में कॉमनली इस्तेमाल हो रहे होते हैं। हमारे पेरेंट्स को या मेड्स को या मदर्स को तो इस चीज का पता होता है, लेकिन हम इससे फेमिलियर नहीं होते। अगर किसी चीज से आप फेमिलियर हैं तो मैं एक छोटी सी कॉमन एग्जांपल यहाँ कोट करना चाहूंगा। हम सैंड बाथ से फेमिलियर हैं। आपने देखा होगा रोड साइड्स पे हमारे पास अक्सर ऐसा होता है कि हमारे पास कुछ पठान भाई होते हैं जो हमें, आपने देखा होगा कि चने भून के बना कर दे रहे होते हैं, या हमारे पास जो मकई है जिसे हम छल्ली बुलाते हैं वो हमें भून के बना के दे रहे होते हैं। वो उन्होंने कोन टाइप पेपर स्ट्रक्चर्स बनाए होते हैं जिसमें वो आपको थोड़ा सा फिल करके देते हैं, वो कॉमनली खा रहे होते हैं। अगर आप आज से कुछ थोड़ा पीछे जाएं टाइम में तो ये चीज ज्यादा कॉमन थी, अब ये चीज उतनी कॉमन नहीं है। ठीक है, तो वो एक्चुअली सैंड बाथ या सॉल्ट बाथ यूज कर रहे थे उसे हीट करने के लिए। वो आपके सामने कुछ चने का थोड़ा सा पोर्शन लेगा, उसे सॉल्ट में या सैंड बाथ में फेंक देगा, फिर उन्हें आहिस्ता आहिस्ता हीट अप करेगा और वो फिर आपको भून के देगा, विच इज एक्चुअली क्वाइट टेस्टी। ठीक है, आई होप किसी ना किसी ने आप में से ये अपने सामने जरूर देखा होगा। अगर देखा हुआ है, आपने अपने सामने एक्सपीरियंस किया हुआ है इस चीज को, तो बताएं। anyone in the class who has personally experienced this? Yes sir, मैंने किया experience. यस सर। Okay, good. रहीम खान एक गर्म इलाका है, लिहाजा यहाँ पर इस तरह से भुनी हुई गर्म चीजें थोड़ा कम जो ना हमारे यहाँ ट्रेंड है। लेकिन अगर आप किसी हिल स्टेशन पे जाएंगे तो इसका ट्रेंड निस्बतन बहुत ज्यादा होगा। फॉर एग्जांपल मरी हिल्स पर जाएंगे, नारायण जाएंगे, काहान जाएंगे, तो फिर ये चीज आपको बहुत ज्यादा मिलेगी, क्योंकि वो ज्यादा ठंडा इलाका होता है तो वहां पर इस चीज को एंजॉय भी ज्यादा किया जाता है, हॉट फूड को। ठीक, सो वाटर बाथ अगर हम यूज करेंगे, there is an important line at the description of this figure 2.7 on page number 25, that a water bath can only be used for melting points below 100 degrees centigrade, while an oil bath can be used for those above 100 डिग्री सेंटीग्रेड। क्यों? क्योंकि वाटर जो होता है 100 पे खुद बॉयल होना शुरू हो जाता है, तो चीज के अपने बॉइलिंग पॉइंट से पहले पहले तक किसी चीज के मेल्टिंग पॉइंट के बाथ के तौर पर यूज हो सकती है। वरना जब वो खुद बॉयल होना शुरू हो जाएगी तो वो तो बॉयल करके एवेपोरेट कर जाएगी, ये इंस्ट्रूमेंट तो खाली हो जाएगा, तो फिर वहां पर वो ये फाइंड आउट नहीं कर सकेगी। तो एज सिंपल एज दैट, वाटर बाथ जो होता है वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर वर्क नहीं करता, फिर हम ऑयल बाथ यूज करते हैं। ऑयल बाथ की भी एक लिमिट होती है, अगर हमने ज्यादा हीट करना हो, जैसे हमारे, मैं भी कह रहा था, हमारे पठान भाई ये काम करते हैं और वो चनों के लिए, छिल्ली के लिए करते हैं, क्योंकि वो सॉलिड फूड है तो ऑफ कोर्स उसके लिए ज्यादा जरूरत होती है, तो फिर उसके लिए वो सैंड बाथ या सॉल्ट बाथ्स यूज करते हैं जो बहुत ज्यादा हीट कर सकते हैं। तो सैंड बाथ्स या सॉल्ट बाथ्स जो होते हैं वो बड़े आराम से 400, 300, 500 डिग्री सेंटीग्रेड तक ये काम कर सकते हैं। ठीक जी बेटा। सर कभी कभार वो दोनों मिक्स भी कर देते हैं सर। हाँ, मिक्स भी किया जाता है। एक्चुअली सैंड बाथ में आप चीजें बना तो सकते हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये होता है कि समटाइम्स चीजों के अंदर ना सैंड शामिल हो जाती है, विच इज देन नॉट गुड फॉर किडनीज। वो किडनी स्टोन का बायस बनती है। तो आहिस्ता आहिस्ता हमने ये चीज ऑब्जर्व की कि सैंड बाथ से बहुत बेहतर है कि आप सॉल्ट बाथ यूज करें। तो सॉल्ट बाथ यूज करनी चाहिए प्योरली, अगर वो ना कर सकें, क्योंकि वो थोड़ी सी महंगी होती है, थोड़ी सी महंगी होती है, ज्यादा फर्क नहीं होता है। ठीक है, लेकिन उस बंदे के लिए जो ये काम कर रहा है उसके लिए बहुत फर्क होता है, हमारे लिए बेशक फर्क ना हो। तो फिर वो सॉल्ट बाथ की वजह सैंड बाथ यूज करते हैं, क्योंकि सैंड इजीली अवेलेबल होती है, फ्री में मिल जाती है। ठीक है, सॉल्ट तो पैसों से लेना पड़ता है। ठीक,
वेल वापस आते हैं हमारे पास पेज नंबर 24 के बॉटम पर एक टेबल है. इस टेबल को आपने मेमोराइज नहीं करना है, एक्चुअली इसमें अंडरस्टैंडिंग का पार्ट होगा. मैं आपको समझाऊंगा कि इस टेबल से क्वेश्चन कैसे आएगा, बट विल डू दैट इंशाल्लाह टुमारो. आवर वर्क फॉर टुडे वाज प्योर सब्सटेंसेस, impure substances, mixtures, how the melting and boiling point can be a test for pure substances. And in order to quantify it, इसके ऊपर mathematically work करना, ये टेबल का पोर्शन है. ठीक है, ये इंशाल्लाह हम कल करेंगे. Also including from today's topic, how to find out the melting point of a solid in an electrical apparatus as well as in a manual apparatus. दोनों की डायग्राम्स बुक पे हैं. उसका पूरा तरीका गो थ्रू करने की जरूरत नहीं होती है, वो सिर्फ बेसिक अंडरस्टैंडिंग को रिवाइज करने के लिए. ठीक. So that's about it. We'll inshallah start from this bottom table on page number 24 tomorrow. If you have any questions, please ask. If not, then it's almost time and I'm about to end the class. Also, before I do that, सर जी बेटा, अगर किसी की अटेंडेंस नहीं हुई है तो वो करवा लें.